to start the recording. Hi, welcome all of you. So this is truly an international group. Okay, so I have people from. I feel very happy having people from across the globe. So hi, welcome all of you, and this is just an introductory session today that I have organized because some of you are interested in KP. Hi, Mr. Ramnath. Some of you are interested in KP. Some of you are interested in VEDIC. In fact, Peter is already doing VEDIC with me, and he is through. He's through with more than 50% of the course is over, the VEDIC course, and after that he plans to switch to KP. And this lady from Vietnam, she's not doing a course with me, but she is studying through my videos. She is doing the VEDIC course. So, and today, today I just wanted, I'll interact with each one of you one by one after after whatever I have to say as an introduction. अच्छा, सभी लोग, all of you, रंजना जी, आप English से comfortable है ना? Yes, sir. No problem. No problem, na? Okay. Okay. So I still I'm not able to. ये iPhoner में जो भी है, I'm not able to get through. iPhone में whoever is there. And 1 minute, let me see. I think there was one lady who was trying to get across, but maybe. So, friends, अरुणा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. आपसे अगर कुछ बात करना हो तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगा ना. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. डॉक्टर वरिंदर सिंह, वेलकम. यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट कर लीजिए. अल्फिया जी, यू कैन आल्सो अनम्यूट योरसेल्फ. एंड so friends, welcome. And I don't know if all of you can, because if you are not on the screen, then I don't know whether you are able to hear me. And I would just, अरुणा जी, मैडम अरुणा शाह, कैन यू, अभी आप सुन पा रही हैं मुझे अरुणा जी? जी सर, सुन पा रही हूँ. अच्छा, ठीक है. आप 1 मिनट स्क्रीन पे आ जाइए ना, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए. वरिंदर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर वरिंदर सिंह, कैन यू प्लीज कम ऑन द स्क्रीन? अल्फिया जी, आप लोग प्लीज थोड़ा सा स्क्रीन पे आ जाइए. बाद में तो जब हम कुछ ग्राफिक्स प्रेजेंट करेंगे तो फिर हम लोग सब लोग स्क्रीन से हट लेंगे, ऑल ऑफ अस. सो वेलकम. आई थिंक मोस्ट पीपल हैव जॉइंड, and I'm still not able to identify iPhoner कौन है. I don't know. There's some connection problem with whoever you are. iPhoner के नाम से जिसका भी आ रहा है. So as and when your connection is established, do introduce yourself, please. Okay, so now friends, ये एक mixed, मैंने एक introductory रखा है क्योंकि you see there is a tendency these days, अभी ऐसा हो गया है कि most people, they want to start with KP straight away, which is not possible. अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, अगर मान लीजिए बहुत एडवांस्ड वैदिक नहीं भी आती है, एटलीस्ट if you don't know the basics of Vedic or at least some predictive techniques of Vedic, then you cannot, I repeat, you cannot do KP. That's where you will get trapped. If without learning Vedic, if you try to graduate to KP,
It's not possible. बहुत मुश्किल है. It's going to be difficult. So Peter, जो right hand side screen पे है, Peter is from he is from Thailand. He is from Bangkok. He is doing a Vedic course with me. It's a one-on-one course, and he's already 50%, more than 50% through with it. And after he finishes his Vedic with me, he plans to start a Vedic course with me. Okay, your experiences, of course, you can share later on. And this lady from Vietnam, I call her Mary because she has a name which I find difficult to pronounce. So I've just given a name to her, so it's easier for me. Mary is doing nice. She's not doing a course with me one-on-one, or she's not joined a batch. ये इन्होंने मेरे videos लिए हैं Vedic के, and she's doing the course through videos. Of course, I would strongly advise her. Once I start a Vedic batch, you can always join the batch, Mary. Okay, even if you've taken the videos, you can always join the batch. It'll be helpful. Yes, Alfie. Yeah, so Rajiv, as I told you before, I have done a Vedic course in the local, but this idea of, do you also provide your videos? I would like to go through your videos. Yeah, of course. I do. Yeah, I because do. then I was thinking of asking you this, but I didn't want to put you No, into I a provide situation where you. Yes, I Okay. do. You see now, I'll tell you what. मेरे जो videos अभी existing हैं Vedic के, so those are my batch videos. The courses that I have Correct. done with Yes. batches. So that will be for you. It's not a problem because my sessions are bilingual. I speak in both. अगर मैं एक Correct. subject matter पे एक line अगर हिंदी में बोलता हूँ, तो invariably I'll speak in English also. So I have that Correct. set ready. But if you want it only in English, then out of about 25 to 30 classes, I have some 17 videos ready, which I am doing with Peter. तो अगर आपको bilingual चलेगा तो वो मैं आपको bilingual दे दूंगा. I understand Hindi. I understand English. The reason why I'm asking for your videos is because I don't want to irritate you during the KP, because every teacher has a very, very different style of teaching. There's some teachers could go too depth into a topic, and I don't know. I cannot, since I've done only with one teacher locally, I'm not really sure how depth I've gone into. But if I can redo or listen to your videos, it gives me an idea as to what your style of teaching is, and then maybe I can upgrade. I can join the. I do hope to join the KP astrology class, and it would be easier for me to integrate. And I don't want to irritate you during the classes. No. I don't. Number one, I don't get irritated easily. I don't get irritated. Try me, Rajiv. Try me. If you don't get irritated, try me. Okay, I'll try you. That's not a problem. Anyway, have you watched any of my Vedic videos so far? You haven't. I haven't. No. You haven't watched my Vedic videos. No. I don't know. See, in the Indian Vedic astrology also, there are various paddhatis. एक तो Parashari है जो कि जो traditional Indian Vedic astrology है, which is pretty exhaustive. बहुत लंबा है वो. I mean, वो कहाँ से शुरू और कहाँ खत्म वाली बात है. And I know students and even astrologers for that matter, who have done 4-year courses and still they're sort of nowhere. But वो end में क्या होता है कि they give it up altogether, and that's what happened with me also. Actually, when I started learning astrology, that was of course 30-35 years back. Then I started with Vedic. हम लोगों के जमाने में तो ना तो कंप्यूटर हुआ करता था, कुछ भी नहीं था. We didn't have any computers. Everything was sort of manual. Right. So, I also started with Vedic astrology, the traditional Vedic astrology, and काफी दिन तक मैं पढ़ते I got so frustrated. So I found that I was landing nowhere. Okay, I was just going round and round in circles till I discovered KP. And then I started doing KP. I did KP, and then I had sort of given up Vedic altogether. Okay. Then till I discovered, again, I'm repeating, till I discovered this systems approach of Vedic astrology that I follow and that I teach.
which is, it is, you can say it is, the basics of course are the same as traditional Vedic astrology, but then so many rules and definitions and so many things that have been found not to work. Okay, I will not dismiss them. I'll just call them, I will not say that our astrological forefathers उन्होंने जो लिखा वो गलत था. No, that is not the case. But maybe what they wanted to pass on has not been passed on to us. Maybe due to lack of print media or whatever. So the systems approach that I teach, it is a paddhati जिसमें कि the best of Vedic astrology has been sifted. Sifted का मतलब उसको छान करके जो उसका residue निकलता है, the useful part has been assimilated and accumulated and compiled into what they call the systems approach. It is totally a different approach, and it comprises of right from scratch to finish to predictions, about 25 to 30 videos of about 1 hour to 1.5 hours each. That's it. And that's it. Even that is right from the beginning. Whether you know astrology, whether you know the basics or not, आप नए एस्ट्रोलॉजर है, आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तब भी आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो. That is what I teach. I'll send you my video details. आप उसको कीजिएगा, and I would strongly urge you to join my KP course whenever, as and when I start it. And Mr. Ramnath, I think you were also interested in the Vedic course, no, Mr. Ramnath? Yes, of course, sir. Yes, you're interested in the Vedic course. Yeah. KP. So no. Sorry, not Vedic. Vedic, I have initial knowledge, self-study, etc. But of course, I have did KP course as well. Okay, but I saw your videos on YouTube and I was quite interested to learn KP with you. Okay, so yeah, you're a KP aspirant. Okay. Yes, of course. डॉक्टर साहब, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आपने शायद वैदिक के लिए हमें अप्रोच किया था ना, वैदिक के लिए? जी सर, मैंने वैदिक कर रखी है आपसे. अप्रोक्सीमेटली 30 वीडियोस वर देयर. आपने तो मेरे वीडियोस लिए हुए हैं. जी सर, आपने लिए हुए हैं. हाँ जी. उस टाइम आप कह रहे थे कि आप कुछ नई कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं केपी के रिगार्डिंग, which will be the mix of Vedic and KP. हाँ, तो अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं केपी और वैदिक, देखिए क्या होता है ना कि unless and until you know वैदिक, तो मैं मिक्स करके पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे. ठीक है, तो अब आपने अगर कर लिया तो आप मैंने जो अब एस्ट्रोलॉजी जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स. दोनों के कुछ रूल्स जो हैं which I find relevant, Vedic rules which I find relevant for KP, उसको मैं KP के साथ assimilate करके. हेलो, आप अभी आया तो था आईफोनर में. आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हु यू आर. आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, आईफोनर करके जो आ रहा है अभी? आई थिंक यू वर ट्राइंग टू स्पीक, आइदर यू हैव अ कनेक्शन प्रॉब्लम और आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे. आप अनम्यूटेड तो हैं, सो यू कैन स्पीक इफ यू कैन हियर मी. ओके, अरुणा शाह जी, आप बताइए. आपने भी तो मेरे वीडियोस केपी के शायद लिए हैं ना? जी सर, मुझे केपी सीखना है सर. आपको केपी सीखना है? वैदिक में हम पढ़े हैं. वैदिक आप पढ़, तो सभी लोगों ने वैदिक इनफैक्ट कर लिया है ना? तो ठीक है, फिर मैं केपी का ये बताइए. आप लोग के वैदिक में आपने, जैसे अरुणा जी, कहाँ से वैदिक किया आपने? वैदिक मैंने फ्यूचर समाचार से किया. कितने दिन का कोर्स था? वहाँ तो बंसल जी ने बहुत सारे पीरियड लिए थे. हाँ जी. अच्छा. फिर 70 से भी किया. वैदिक लगभग पूरा किया है मैंने. वर्षफल, मुंथा, मुंथिस, बहुत कुछ किया है. वैदिक में अच्छी पकड़ है, केपी नहीं समझ में आता. अच्छी पकड़ है, आप प्रेडिक्शंस कर लेती हैं उससे? जी सर, कर लेती. अच्छा, चलिए ठीक है. तो किया, होरारी भी किया. अच्छा, आपको केपी में प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है ये बताइए. आपने तो वीडियोस मेरे लिए हैं. हाँ, ये लेकिन वो साउथ इंडियन चार्ट नहीं समझ में आता है, वहीं से गड़बड़ हो जाती है. देखिए, साउथ इंडियन चार्ट
को समझना, कुछ उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, सिंस यू आर लेकिन ऑलरेडी एन वो एस्ट्रोलॉजर। बाद में पता तो चला, लेकिन जो हाँ, सर ने सिखाया ना वहीं से सिंस यू गड़बड़ आर कर दिया ऑलरेडी था। एन एस्ट्रोलॉजर, तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हाँ। साउथ इंडियन चार्ट में और नॉर्थ इंडियन चार्ट में। आई मीन, यू नो, देयर नहीं, जस्ट अ हमने अभी तक डिफरेंट, नॉर्थ इंडियन चार्ट ही लिया था, there that is डायमंड चार्ट just पे ना। a different style of presenting, you know, a या horoscope. या तो since you're already an astrologer, तो आपको तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। But anyway, तो चलिए केपी, जब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, सी नाउ अभी क्या हो रहा है ना कि टुडे आल्सो आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग अबाउट 10 to 15 people to join. All of them have not. One person, of course, अभी iPhoner के नाम से जो आ रहा था, and that is also gone from the screen. I think whoever he or she, madam is, or the gentleman is, there he is having some, he or she is having some connection problems. अब आप लोग पूछिए मुझसे, अगर you know, since I wanted this to be an interactive session, what जो भी आप ज्वाइन करेंगे, with you're going to join my Vedic or my KP, what are your expectations from me? मैं कैसे पढ़ाऊंगा वो तो भाई मैं एक दो ग्राफिक्स आपके सामने खोल करके मैं डिस्कस करूंगा। सिंस ऑल ऑफ यू सीम टू नो वैदिक प्रिटी वेल, जैसे लग रहा है मुझे, ऑल्दो आई एम ऑफ द व्यू कि जो मैं सिस्टम अप्रोच से वैदिक पढ़ाता हूँ वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप एक बार सिस्टम्स अप्रोच आप मुझसे पढ़िए, बेशक मत पढ़िए, बट यू मस्ट यू नो सी माय वीडियोस। आप मेरे वीडियोस को, वैदिक वाले वीडियोस को देख करके पढ़ के देखिए, यू विल फाइंड द डिफरेंस। डॉक्टर वरिंदर ने तो देखा होगा ना मेरे, आपने सर, आपने मुझसे वैदिक, मैं एक्चुअली इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए ना, सॉरी फॉरगिव मी, मैं भूल जाता हूँ। आपने वैदिक के वीडियोस दिए थे मुझसे डॉक्टर साहब? जी सर, वैदिक मैंने पूरा किया आपके साथ सर। तो आप ये बताइए आपका कैसा, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस विद द सिस्टम्स अप्रोच जो मैंने पढ़ा है? इट वाज अ सिस्टम अप्रोच हाँ, एंड इट वाज हैविंग द मार्वेलस एक्सपीरियंस विद मी सर। okay, you found the experience good, and वेरी गुड। सबसे you see the most important part is whether it is marvelous or not, you see it is simplified, it's not complicated. See, all the complications that are contained in traditional Indian Vedic astrology, वो complications को और difficulties को हटा दिया गया systems approach में। जी तो वो तो डॉक्टर वरिंदर will bear me out and Peter will bear me out because he is doing the course with me right now. Because we are in the midst of doing वो the जो course. डायरेक्ट आप जरा सा अप्रोच थी अपना ना सर। वीडियो भी खोल सकते हैं क्या, so that people can जी see you speaking जी also? जी वही सर, जो 6-8-12 का एक्सपीरियंस था वो काफी अच्छा था। जी और बाकी जो प्रोडिक्शंस का था, सॉर्ट ऑफ यू कैन से प्रोफेशन का था, हेल्थ का था, फाइनेंस का था, दैट वाज वेरी गुड सर। सारे जो एग्जांपल्स आपने लिए थे, आपने अपने बेटे का एग्जांपल भी दिया था, तो वो काफी अच्छे मतलब नॉलेज थी उसमें सर। लगभग 1 साल हो गया उस चीज को किए हुए। जी जी हाँ जी, and हाँ just about 25 to 30 videos is all that जी you know जी, you need. राइट। और हाँ अच्छा, सर, साथ में मैं राइट अप्स भी भेजता हूँ। हाँ और राइट मेरी, I अप्स have भी not हैं sent सर you the मेरे write पास। ups. I'll send you the write ups. Okay, I have still to send you because my English set is not complete. That will, you know, like today I sent you lesson number 17 because the Yes. English set is getting completed as you know I am proceeding with Peter. So as I conduct a class of his, the video is ready and I send it to you. So 17 videos you already have. I'll send you the write-ups also. You know, if you take printouts of my write-ups, you have an entire book on Vedic. Okay, you have an entire book consisting of about 100+ pages, and that is all that you require. उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? तो, and by the way, I have KP videos also. Anybody who wants to just study from my, but let me tell you, KP is slightly more. I will not use the term complicated, but anybody who has done Vedic, उसको थोड़ा सा KP समझने में थोड़ा सा a bit more, it's slightly complicated. Let's put it that way, because Very KP में
the timing of events is the beauty of KP is the timing of events. बाकी तो predictions इसमें भी हैं, उसमें भी अगर आपने आज का मेरा वीडियो देखा होगा, if you watched the video that I have posted today with an example chart of delayed marriage, which I have, sort of analyzed both through KP as well as Vedic, both giving the same result. Okay, both giving the same result. दोनों में सेम रिजल्ट आता है. अभी क्या है कि अगर वैदिक से मैं चाहूंगा कि किसी इवेंट को टाइम करूं, I can do it. You can also do it. I can also do it. But the accuracy level, in KP, especially for timing of events, is not there in Vedic. में थोड़ा सा उसमें कमी है. कर सकते हैं, but exactly pinpoint नहीं कर, थोड़ा मुश्किल होता है करना, slightly difficult. Whereas KP, you can pinpoint, you can time events, you can pinpoint almost. Of course, KP, one caveat is if you all are thoda bahut bhi conversant with KP, the caveat in KP is that the time of birth has to be absolutely spot on. If the time of birth is not spot on, then your predictions can go haywire. So वो KP में थोड़ा सा है problem, क्योंकि KP is actually it's all based on precision. अभी देखिए, अगर if anybody wants to ask me anything, otherwise मैं एक दो graphics खोलूंगा and we'll just I'm having another session tomorrow also. So if we are not able to finish today, then we'll continue tomorrow also with this same session. अभी एक दो मैं graphics खोलूंगा and we'll see why KP and what is the difference between Vedic and KP. वो हम देखेंगे. That उसको हम थोड़ा सा देखते हैं. My write-ups all my write-ups are in English. हालांकि मैं जब पढ़ाता हूँ, बैचेस को पढ़ाता हूँ, तो I speak both in English and Hindi. तो इनफैक्ट मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं. और पीटर को मैं पढ़ाता हूँ, when I'm teaching Peter, you see the same thing. I'm speaking only in English, so it takes only half the time. I was also in the beginning saying time इतना जल्दी खत्म हो जा रहा है. Anyway, तो चलिए let's I'll just share one or two screens with you. एक दो graphics मैं आपके साथ share करता हूँ. Okay, now देखिए. Okay, now once can you all see the screen, please? Yeah. All of you Yes, can sir, yes, see sir. the screen. Yes. Okay, Yes, देखिए, sir, what yes. is KP? Okay, what is KP? An introduction. And इसमें हमने एक वो presentation बनाया है जिसमें दोनों का difference हमने KP और इसमें क्या है. I have tried to sort of just as an introduction. So here's a chart. Okay, here's a chart on the left side. The chart a horoscope, and then I have prepared this is the first page. There's a second page also after this. Okay, now to understand KP and especially this introductory chapter, it is presumed that you have a basic understanding of the KP concepts of the basic concepts of traditional or Vedic astrology. Without a knowledge of basic Vedic astrology, that's what I have been speaking, without a knowledge of basic Vedic astrology, at least you cannot understand or learn KP. There are a number of reasons, rules, principles, differences between Vedic and KP astrology. Today, we shall only study the first rule that differentiates Vedic from KP. On the left side is a hypothetical horoscope. We shall see how predictions for planets as per Vedic astrology would differ from predictions under KP for the same chart. This is not that Vedic se hum prediction nahi kar sakte, but there are certain predictions, which we can do through Vedic, but we cannot do. There are certain predictions which we have to take the help of KP also. We have to combine both. That's what is meant. Okay. Vedic astrology would differ from predictions under KP for the same chart. This is the best way to learn KP. We are furnishing below 2 tables
highlighting the predictions planet-wise according to Vedic principles and also according to KP principles. We shall then discuss why the predictions arrived at are different from both the Paddhatis. Okay, planet-wise predictions under Vedic. The first table on the left side नीचे जो है उसको मैं पढ़ रहा हूँ. देखिए, I have done it planet-wise. Moon in the way when we analyze it from the Vedic angle, Moon is in infancy. Infancy means a planet that is less than 5 degrees. It's called, it is in infancy. मतलब वो अपनी बाल अवस्था में है. It is in Moon in infancy in ascendant may make native prone to ill health in transit or its अंतर्दशा. मून की जब अंतर्दशा चलेगी तो हम वैदिक के प्रिंसिपल से जब इसको हम देखेंगे, एक ओवरव्यू जब लेंगे, तो मून it is in infancy in the ascendant may make a native prone to ill health in transit or its antardasha. Saturn, a functional malefic planet. It is a malefic planet because it is the lord of the 6th house with a Mool Trikona Rashi. A functional malefic planet sitting in the 6th may result in serious health hazards. Venus in 8th. Old age. It is in old age, that means it is more than 25 degrees. Lord of 4th may disturb education, assets, etc. because it is situated in the 8th house, which is supposed to be a malefic house, and it is in old age, so it becomes weak. Jupiter in the 10th is in strength, with a good dispositor may give a good job. Mars in 11th, Lord of 11th may give a good job, income. ये हम वैदिक से presumption करते हैं. Mercury in the 12th weakens 3rd house sun, weakens 2nd, okay, 2nd house. अब ये तो हो गया कि हम अगर वैदिक से इस हॉरोस्कोप को देखेंगे, ये एक हाइपोथेटिकल हॉरोस्कोप है. वैदिक से हम देखेंगे तो हम क्या प्रिजम्पशंस कर सकते हैं. प्राइमा फैसी है ये. वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू डेप्थ, जस्ट टू एक्सप्लेन फर्क कैसे है. इसको हम देख करके वैदिक एस्ट्रोलॉजर क्या प्रेडिक्शन कर सकता है और एक्चुअली केपी से क्या प्रेडिक्शन निकल करके आता है. व्हाट हैपेंस प्लैनेट वाइज प्रेडिक्शंस अंडर केपी. मून में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. इट इज मेक नेटिव प्रोन टू इल हेल्थ. हमने वैदिक से हमने जो है इसकी रीडिंग की है. मून गेव अ गुड जॉब ड्यूरिंग इट्स अंतर्दशा. मून ने कुछ खराबी नहीं किया अपने अंतर्दशा में, उसने एक अच्छा जॉब दे दिया. अब ये है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केपी एंड वैदिक, क्योंकि दोनों के रूल्स अलग हैं. वो हम सेकंड वीडियो में देखेंगे, सेकंड ग्राफिक में देखेंगे. सैटर्न, द नेटिव परचेज्ड अ हाउस ड्यूरिंग इट्स अंतर्दशा. अभी सैटर्न के लिए हमने क्या लिखा है, इट में रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ हैजर्ड्स. बट होता क्या है, द नेटिव परचेज्ड अ हाउस ड्यूरिंग इट्स अंतर्दशा. वीनस गेव गुड प्रोफेशन ड्यूरिंग अंतर्दशा. वीनस के लिए क्या लिखा था, इट इज इन 8th इन ओल्ड एज मे डिस्टर्ब एजुकेशन, एसेट्स एक्सेट्रा. हुआ क्या, वीनस गेव गुड प्रोफेशन ड्यूरिंग इट्स अंतर्दशा. जुपिटर gave accidents, obstructions during its antardasha. Jupiter क्या लिखा है हमने वैदिक में कि it will give a good job. Mars gave heavy expenditure, losses during antara. It's antara means antardasha. Mercury gave good income, wishes fulfilled. Sun gave a good job. तो ये दोनों में केपी और वैदिक में डिफरेंस है. और ये क्यों डिफरेंस है, क्योंकि as I told you दोनों के रूल्स अलग हैं. Not again repeating, not कि वैदिक हमको नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है. अगर आप वैदिक नहीं पढ़ेंगे तो आप केपी नहीं सीख सकते. Now we'll take the second page of this write-up. इसका पेज नंबर 2 में हम चलते हैं. सर ये देखिए, ये इसका मैं खोल रहा हूँ आपके सामने, पेज नंबर 2. ये आ जाएगा तो आप लोग मुझे जरा बताइएगा. आ गया स्क्रीन पर? Has it come on the screen? Yeah. Okay. Okay, now see, now abhi isi number 1. We're just studying KP ka golden rule number 1. The result of the house in which its nakshatra result will be felt during the dasa period of the planet, especially during basic difference क्या है? Basic difference क्या है? एक और मेरे पास प्रेजेंटेशन है. आज तो ज्यादा देर हो जाएगी, कल उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे. में
नक्षत्रों का कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते हैं, जो हम जैसे जो नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं एस्ट्रोलॉजी में, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल बी एब्सोल्युटली नोवेयर, आप समझ नहीं पाएंगे, इतना वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं, और हम जो सिस्टम जो अप्रोच में पढ़ाते हैं वो जब आप वैदिक मेरे साथ करिएगा तभी समझ में आएगा। लेकिन ये 2 चार्ट्स हमने देखे थे, और ये दोनों ये रिपीट है। देखिए यहाँ पर planet wise predictions अंडर वैदिक, ये फर्स्ट टेबल लेफ्ट साइड में, planet wise predictions अंडर केपी, ये जो लास्ट हमारा ग्राफिक था उससे दिस इज अ रिपीट। बट हाउ रिजल्ट्स, थर्ड ग्राफिक देखिए ऑन द राइट साइड दिस ईयर, 1 second. Yeah, you can follow this cursor. How results as per KP are given. We saw that, what we are going to, as an astrologer, what we could predict through Vedic and what happened KP के through. Why? क्यों ऐसा होता है? मून का रिजल्ट हम देखते हैं, मून इज इन कैंसर। देख, you understand that every planet in a horoscope, it is placed in a sign, किसी राशि में वो planet होता है। ठीक है, 12 राशियां होती हैं, उसमें 12, आप लोगों को बेसिक्स आता है तो 12 राशि में से किसी न किसी राशि में, किसी न किसी भाव में या हाउस में, a planet will be situated, and every planet will be situated in a nakshatra, okay, a constellation, और हर एक नक्षत्र का कोई एक स्वामी होता है, लॉर्ड। सो द केपी का क्या रूल है कि कोई भी प्लैनेट जिस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उस नक्षत्र का जो लॉर्ड है, वो लॉर्ड हॉरोस्कोप में जहां बैठा है, वो प्लैनेट ए जिसकी हम बात कर रहे हैं, सपोज प्लैनेट ए इज सिटिंग in the nakshatra of planet B, which is sitting in a particular house, say the 10th house. So planet A, regardless or irrespective of wherever it is sitting, will give the result of the 10th house. Why? Because it is sitting in the nakshatra of planet B. Planet B is the lord of nakshatra, जिसमें planet A बैठा है, and that planet B is sitting in the 10th house. So planet A will give the result of the 10th house. Any कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? Somebody is asking something. Okay. Now look, I have tried to explain. Yes. Anyone asking me anything? कुछ पूछ रहे हैं क्या? Okay. Moon. Now look, in this horoscope, moon is in Cancer. Okay. Now where is Cancer? Moon is in Cancer. Cancer ascendant है, ये देखिए यहाँ पर Cancer, यानी कि कर्क में चंद्रमा बैठा हुआ है। जरा म्यूट कर लीजिएगा, पीछे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। बहुत सारो तो चिंता ना करी, वो माइनर हसे तो हाँ म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है जिनके भी इसके, अभी म्यूट कर लीजिए। व्हेन यू वांट टू स्पीक यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, चिंता ना करिए इसमें। हाँ, देखिए मून, ओके, नाउ वी आर कमिंग बैक। मून इज इन कैंसर। अरे चिंता ना करिए, सारो થઈ જશે। हाँ हाँ मगर Moon is in Cancer. You can see from the horoscope. Moon is in Cancer in Punarvasu Nakshatra, Lord of which is Jupiter, sitting in the 10th house. Okay. So लेक्चर ચાલે છે જનો। हाँ हाँ, चिंता कहीं हो तो मैंने फोन कर देगा। हाँ, चिंता ना करिए, सारो। हाँ हाँ, ये आज काले हवाले में जोड़ी। हाँ हाँ मगर चलो, अब सारो सारो सारो। okay, so Moon is sitting in Cancer in the ascendant, and Moon is in nakshatra called Punarvasu, whose lord is Jupiter, and Jupiter is sitting in the 10th house here. So Moon primarily, if we look at it from the Vedic angle, primarily Moon will supposed to give the result of the Lagna, okay? And as per its weakness or strength, good or bad, whatever. But in KP, Moon will primarily give the result of the 10th house. Why? Because it is sitting in the nakshatra
of a planet, nakshatra, is called Punarvasu, whose lord is Jupiter, which is sitting in the 10th house. So moon during its dasha, antardasha, will primarily give the result of the 10th house. Moon सबसे पहले KP के rules के हिसाब से 10th house का result देगा. Okay, that is the difference. That is the difference between, that is the golden rule number 1 that we call in KP. A planet A sitting in the nakshatra of planet B will give the result of the house where the nakshatra lord, that is planet B, is sitting. Oh, So moon is in Cancer. Somebody asking me something. Moon is in Cancer in Punarvasu Nakshatra, lord of which is Jupiter, sitting in 10th. So moon will primarily give the result. So moon will primarily give the result of the 10th house, which could be a job. Okay. Now next, let's come to Saturn. Is in a nakshatra called Mool Nakshatra, lord of which is Ketu, sitting in the 4th house. So Saturn during its antardasha, Saturn gave the result of the 4th house, and the native purchased a house. Jupiter is in Aries in Bharani Nakshatra, whose lord Venus is sitting in the 8th house. So Jupiter during its antardasha gave the results of the 8th house, that is accidents. That is accidents, obstruction. Mars sitting in the very auspicious 11th house, but in the nakshatra of Sun gave heavy expenses as losses, as the nakshatra of Mars, that is Sun, is in the 12th house. So see here now, Mars is sitting in the auspicious 11th house, but in the nakshatra of a planet, that is Sun, which is sitting in the 12th house. So Mars during its dasha and antardasha will primarily give the result of the 12th house, which is an inauspicious or a so-called malefic house. 6th, 8th, and 12th houses are called malefic houses. So this is, I don't know, my session is becoming a one-way session. Nobody is asking me any questions. So, nobody is asking me any questions. सर can आप all of I you- have a लोगों को question. सबको म्यूट कर दें सर, आप कॉमनली म्यूट कर दें सबको. अरे मैं कर रहा हूँ. So can I ask a question? हाँ, please do. Yeah. So you said that the planet. One minute. Yeah, sorry. Yeah, tell me, So- please. Yeah. So you said that I heard you mentioning every time that the planet will give in the antardasha, May I know who's speaking, please? This is Ramnath here. Yeah, Ramnath ji, boliye. Yeah. So see, there are three things. One is the dasha lord, one is the antara lord, the other one is the bhukti lord. Okay. Yeah. So we give mainly weightage for the primary, the main course, the major dasha is a planet, and then the antara dasha is another planet. Now, predominantly, the results will be of the antara, or how we have to. Yeah, assume of in course. I KP. mean, that is getting into predictive astrology. I was just trying to explain to you. Always the antardasha lord, the antardasha lord. Okay. Yeah. Okay. That is the most powerful. Okay. Sure. And of course, there are various rules and various caveats, okay, exceptions, okay, that we'll study but it is always, the antardasha lord is supposed to be the most powerful. Okay. Excellent. Yeah. Okay, sir. Okay. So I don't know if I have made any sense to most of you, all of you. कुछ आप लोग समझे कि नहीं समझे, कितना समझे, Yeah, but this no, is, sorry. It is simple. You've explained it very well, but I do have a question. So Yeah, you please. say the Antardasha Lord is the most powerful, but let's say in this scenario,
Jupiter. Okay. Hmm. Let's say Moon, who is basically in the nakshatra of Jupiter. So during Yeah. the dasha of the moon, because Moon is in a very good nakshatra, Yeah. during the mahadasha of the Moon, shouldn't the native be blessed with, let's say, luck on his side, even though the Antardasha Lord is probably a damaging Lord? Shouldn't that damage be That reduced? damage will be minimized, because you Okay. see, moon will have moon's mahadasha lasts for 10 years. Okay. Correct. Any, Correct. for that matter, let's put Venus. Let's take Venus hypothetically. Okay, suppose we are talking about Venus. Now, Venus Mahadasha lasts for 20 years. Okay. So Yeah. in any horoscope of any native, 20 years cannot be, uniformly the same, irrespective and regardless of whatever Venus, indicates, or wherever, whosoever's, the nakshatra Venus is sitting in, and where that plan, it is not. See, the deciding lord is the Antardasha Lord. That, Okay. of course, is a part of predictive astrology. The combination of the Mahadasha Lord and Antardasha Lord. What results, how, suppose the Mahadasha Lord is very, very malefic, very evil, and the Antardasha Lord is very, very benefic. Then what happens? Then, there'll be a balance. The Antardasha Lord supposed to be very good, but the Mahadasha Lord is supposed to be very bad. So it will be a middling result. Results will be tilted on the benefic side, but Okay. not par excellence. Okay. Suppose both are very good. The Mahadasha Lord as well as the Antardasha Lord are very, very benefic. बड़े अच्छे हैं वो दोनों, है ना? बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छे हैं, बहुत बेनिफिक हैं, शुभ ग्रह हैं, दोनों शुभ ग्रह हैं। शुभ ग्रह हैं तो बहुत ही अच्छा पार एक्सीलेंट रिजल्ट आएंगे। ये है, दिस इज हाउ वी, एंड देन उसके बाद फिर प्रत्यंतर दशा है, देन सूक्ष्म, ऑल दैट ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ, वो आगे हम पढ़ेंगे जब भी हम पढ़ेंगे। एंड जो सिस्टम्स अप्रोच जो हम लोग पढ़ते हैं, जो मैं वैदिक में पढ़ाता हूँ, उसमें लेट मी टेल यू कि कोई भी ग्रह जो है वो नेचुरल मैलेफिक और नेचुरल बेनिफिक का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं मानते हैं, ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन द असेंडेंट, द लग्ना, द नेचर ऑफ अ planet is decided whether it becomes a benefic or a malefic. So we use the term functional benefic and functional malefic. Any planet in a given horoscope will either be a functional malefic or a functional. For a planet with this let's say the horoscope that is open in front of us now, what are we talking about? This is a Cancer Lagna horoscope. Okay, 6th, 8th and 12th are malefic houses. अगर 6th, 8th और 12th में कोई मूल त्रिकोण राशि है तो उसका लॉर्ड जो है वो फंक्शनल मैलेफिक माना जाता है। जैसे सैटर्न, इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ेंगे इस हॉरोस्कोप के लिए, सैटर्न चूंकि 8वें का स्वामी है और 8वें में उसकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, तो सैटर्न इसके लिए फंक्शनल मैलेफिक माना जाएगा, ठीक है? अब वैसे सैटर्न को एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न है या मंगल है, इसको हम क्रूर ग्रह, मंगल को हम क्रूर ग्रह कहते हैं, ठीक है? वो उसका बेसिक नेचर है, बट एक क्रूर ग्रह भी किसी पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में अच्छा रिजल्ट दे सकता है, उसका देने का तरीका अलग होगा। राहु also gives good results, but it has its own ways of giving good results. Material benefits राहु बहुत अच्छा देता है if it is अगर well disposed in the horoscope, but उसके देने के तरीके जो हैं बड़े दूसरे टाइप के होंगे, unscrupulous है वो, it is an unscrupulous planet, वो आपको ले जाएगा गलत तरीकों से, पैसा कमाने की तरफ खींच करके ले जाता है, फायदा देगा वो, लेकिन उसके देने का तरीका अलग होता है। मंगल है तो अपने तरीके से वो वायलेंट होकर के फायदा करा सकता है, तरीके अलग हो। जुपिटर है तो नोबल प्लैनेट, वो अपने हिसाब से फायदा कराता है, नुकसान भी अपने हिसाब से कराता है, नुकसान भी करवा सकता है, लेकिन उतना ज्यादा खराब नुकसान नहीं होगा। तो दिस इज हाउ वी, तो एनीवे, तो ये तो मेरा इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं आई हैव, क्या टाइम हो गया देखिए, ये
9:30 बजने 9:30 बजने वाला है। I have some more graphics जो कि अगर if you all of you are going to join me tomorrow तो इसको और भी थोड़ा सा विस्तार में हम पढ़ेंगे। और आज जो हमने एक वीडियो जो डाला है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखिए, चलिए मैं उसको खोल ही देता हूँ। Just Sir, I have one question, one last question. Yeah. No, why last? You can ask me any number of because questions. we are running out of time, so we can even continue tomorrow. But one quick question: if Yeah. you could quickly, tell the audience in this call as to what are the topics you're going to cover in KP. Okay, and for example, whether BTR will be covered. Oh yes. I've already seen, if you see my last 2-3 videos, उसमें हमने अपने सारा syllabus डाल दिया है। कल मैं ये आपको syllabus इसमें भी दे दूंगा। Tomorrow I'll give you or I've shared it, or I have shared it in my group also, but I'll put it again. Everything, whatever KP में जो भी पढ़ाया जाता है, BTR, of course, BTR 2-3 sessions are there on BTR. Okay, and BTR of all types of BTRs, all shades, all hues, जो भी होता है, when only the time is known, when only the date is known, when nothing is known, not even the year is known, then how to do BTR, how to erect a horoscope of a person who doesn't know when he was born. Place of birth उसको मालूम होना चाहिए. That of course caveat is there, क्योंकि latitude, longitude, essentially he should know the place of birth and of course the approximate year of birth. Okay. Yes. He has to know the approximate year of birth. Okay. So we are assuming that it will be a comprehensive course and not just a no, it'll be a very, very comprehensive course. It's going to be a very comprehensive course. देखिए, ये जैसे एक मैंने आज के horoscope में डाला था, delayed marriage analysis through Vedic and KP both. So say the same results come, but वही है कि जब आप केपी पढ़ाएंगे तो उसमें टाइमिंग वगैरह है, तो ये इसको you can read it, we can discuss it tomorrow क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। ये this is analysis through Vedic, why this is a delayed marriage of a gentleman who's 37 years of age now and not yet married. So what were the reasons? Why hasn't he got married? So this analysis first I've done through Vedic, and here I'm scrolling up the screen, this same chart I have analyzed through KP. Okay. Why the delay in marriage? Why the gentleman has so far not been married? Tomorrow we'll discuss this in detail. So anything else you all would like to ask me? Bataiye. We'll meet tomorrow again, of course. Okay. Thank you, Rajiv. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you very much. क्या ये वीडियो भेज सकते हैं सर जो आपकी बनी हुई है इसकी? कौन सी वीडियो? ये आज वाली व्हाट्सएप पे? ये वाली? आज वाली नहीं सर, इससे पहले जो आप कह रहे हैं ना आपने, हाँ जी आज वाली, इससे पहले वाली भी। हाँ वो तो मैंने आज जो अपना मैंने YouTube पे वीडियो पोस्ट किया है उस पे है ऑलरेडी, उसमें आप देखिएगा, बट वील डिस्कस इट अगेन टुमारो. ओके. So good night to all of you and thank you for attending and hope to see you again tomorrow. Okay. Good night, sir. Good night, sir. You give me your feedback how the session was. Okay. Sure. You give me your feedback. I hope I made sense. That's all that I can say. Oh yeah, you did. You did. Okay. It always makes sense, Rajiv. Don't even doubt that. Yeah. You always make sense. Okay, thank you so much. You make sense definitely, sir. Okay, Peter. Okay, Mary, you understood? Little bit, whatever. Okay, I'm ending the class then. Okay, I'm going to stop the recording and ending the class. Okay then. Bye-bye. Bye.